Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें फेब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर विषय पढ़िबा व्हिच इज एक्चुअली डेवलप्ड बाय टू फ्रेंच फिजिसिस्ट जड़े हेले चार्ल्स फेब्री आउ जड़े हेले अल्फ्रेड पेरट सो यही दुई जनकर ना रे याकू आमे कहबा फेब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर से माने याकू तैयारी करथिले 1869 मसिया रे सो माइकलसन इंटरफेरोमीटर रु एटा टिके डिफर करे एंड इट कंटेन्स प्लेन surfaces which allow multiple rays of light to produce sharp interference pattern ओके सो ये जो इंटरफेरोमीटर अच्छी याकू आमे कॉमनली फेब्री-पेरोट इटालन मध्य कहि परिबा केतेबेले व्हेन द सेपरेशन ऑफ द सरफेस इज फिक्स्ड ओके जदि मूव करूनी फिक्स्ड सेपरेशन रहउची दुईटा जाक सरफेस भितरे ताले आमे ताकू फेब्री-पेरोट इटालन बोली की कहिबा ओके एट अ बहुत यूज वे इन केस ऑफ योर ऑप्टिकल रिसर्च पर्पस ओके सो a point here to remember in French language इटालन माने कोन इट मीन्स द स्टैंडर्ड मेजरिंग गॉज ओके अच्छा सो प्रिंसिपल के आसीबा यार इट इज बेस्ड upon the principle of multiple reflection from a partially reflecting and partially refracting surface in order to obtain the interference pattern दुईटा सरफेस भितरु गोटे partially reflect करथबो आ गोटे partially refract करथबो लाइट को okay now coming to the experimental setup okay a experimental setup actually Fabry-Parot interferometer it poses the same general principle that of your Michelson interferometer okay so याको एबे हमें फिगर रे बुझिबा okay so coming to the figure now this one okay so this is the actual figure of the Fabry-Parot interferometer okay now you see here in this figure the main parts of the constructions are like first hela gote ame source neba s is the source which is actually the extended source of monochromatic light mane single wavelength wala light okay with a collimating lens ओके एठी हमर कोलिमेटिंग लेंस अछि माने एई सोर्सटा एक्चुअली एठी नाही एक्चुअली एई जगह रे अछि ओके सो एठू लेंस रे सोर्स रु हमर जो लाइट आछि देन ए लेंसटा ताकू कोलिमेट करूछि ओके व्हिच मेक्स द इंसिडेंट लाइट पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन ओके माने लेंस रु सोर्स रो डिस्टेंस इक्वल टू निहाती भाबरे ए लेंस रो फोकल लेंथ रे हितबो ओके अच्छा तापरे देखो एठी P1 P2 दुईटा glass plates अछि which are arranged parallel to each other okay so that these two plates can be actually made up of quartz also quartz माने अभ्र तमे जानि छ से quartz रे भी हमें ए दुई प्लेट को तयारी करी परिबा ओके अच्छा गोटे प्लेट को हमें पॉलिश कर रखि दिबा हाईली पॉलिश्ड in order to make complete reflection whereas the other plate will be partially reflecting and also partially refracting or partially transmitting the light okay गोटे को पूरा हाईली पॉलिश रखिबा केवल सेथिरे रिफ्लेक्शन हबो अच्छा नाउ पॉलिशिंग जो हम एक्चुअली करूछु इट इज एक्चुअली डन विथ कोटिंग ओके गोटे सिल्वर कोटिंग तमे जानि छ प्लेन मिरर भी जो तमे जो ड्रेसिंग मिरर यूज करो ता पछरे गोटे सिल्वर कोटिंग थाए जोटा एक्चुअली रेस्पोंसिबल फॉर रिफ्लेक्शन ओके सिल्वर ही पारे किंबा एल्युमिनियम रो भी कोटिंग हमें दे परिबा ओके एक्चुअली सिल्वर कोटिंग इज यूजफुल इन द विजिबल रीजन but its reflectivity is extremely low
पाखापाखि 400 नानोमीटर ओके नानोमीटर माने 400 नानोमीटर एटा विजिबल रेंज रे आसुची सो फॉर वेवलेंथ्स ग्रेटर देन 400 नानोमीटर आमे एल्युमिनियम कोटिंग प्रिफर करिबा यूज करिबा ओके अच्छा now the plates which are actually also known as optical flats okay याको आमे optical flats बोली भी कहिबा and are often made in a wedge shaped okay यारो देखो शेप जदि देखिबो एठी यारो थिकनेस कम अछि एठी बेसी अछि सिमिलरली उल्टा अछि ए जगह रे थिकनेस बेसी अछि ए जगह रे थिकनेस कम अछि ए प्रकार शेप को आमे कोन कहिबा वेज शेप्ड okay in order to prevent the rear surfaces from producing the interference fringes okay acha sometimes the rear surfaces are coated with layers of anti reflective कोटिंग हमको रियर सरफेस रु किछि भी रिफ्लेक्शन दरकार नहीं तेणु करी आमे याको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मध्ये दे परिबा इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द incident light from the rear surfaces right so ए जो high reflecting surface अच्छी it will produce very sharp multiple beam fringes okay अच्छा तापरे after your production of fringes जो फिल्म टा क्रिएट हबो ओके उटे थिन फिल्म एक्चुअली फॉर्मेशन हबो बिटवीन द टू ग्लास प्लेट्स ए जो दुईटा ग्लास प्लेट मझी रे उटे थिन फिल्म रो क्रिएशन हबो ओके एंड दिस थिन फिल्म will contain actually air between the plates okay air ro gote thin film create habo and multiple reflections as you can see in the figure a2 reflection है कि okay zigzag path रे जाउची multiple times reflection होउची okay multiple reflection takes place in this thin film which causes interference pattern okay so the thickness of the air film can be changed हमें याको मूव करिकी ए दुटा प्लेट को थिकनेस को हमें चेंज करि परिबा ओके किबा गोटे प्लेट को यदि फिक्स करि रखले आरो गोटे को मूव जदि करला स्लोली विथ द हेल्प ऑफ ए सम सॉर्ट ऑफ योर स्क्रू ओके अच्छा तापरे हमें एठी देखो यूज करछु गोटे एक्रोमेटिक तमे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रे पढिथबो एठी गोटे क्रोमेटिक एबोरेशन को अवॉइड करिवा पई एक्रोमेटिक फोकसिंग लेंस हमें यूज करूछु इन ऑर्डर टू फोकस द रेज so as to avoid the chromatic aberration तापरे एठी फोकस करी हमें आनिबा गोटे स्क्रीन ऊपरे which is STS okay where the fringe pattern consisting of alternate dark and bright circular fringes एठी मध्ये circular fringes create हबो alternate dark और bright हेकी okay with common center on the optic axis okay so in case of this Fabry-Parot Etalon we may also use a telescope where circular fringes are of equal inclination okay that is called your Hedinger fringes already a विषय हमें पढ़ी सारिछु which are formed on the optical plane of the objective of the telescope okay so एटा गला यार प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमें देखिला एबे हमें थ्योरी आ वर्किंग पार्ट को आसीबा okay moving further so ये जो इंटरफेरोमीटर अछि it is able to produce sharp interference pattern as I said as compared to those obtained with two coherent sources so the sharpness of the fringes depend upon the reflection coefficient of the silvered surfaces okay reflection coefficient जो silver surfaces दुईटा जाको अछि तार उपरे एटा डिपेंड करछि जे फ्रिंज गुडा केते शार्प रहिबो ओके माने केते क्लैरिटी तार रहिबो ओके फॉर दिस पर्पस वी कंसीडर अ प्लेन लाइट रे ऑफ यूनिट एम्पलीट्यूड व्हिच इज इंसिडेंट सपोज एट एन एंगल थीटा on the glass plate that is P1 as shown in the figure okay coming to the figure again next figure okay this one so देखो P1 रे एठी सोर्स रु लाइट आसिला ओके सपोज एटा हला ए पॉइंट रे नॉर्मल टा ई डायरेक्शन रे सो नॉर्मल सहित केते एंगल तयारी कला थीटा ओके सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ओके नाउ ए जो एक्सटेंडेड सोर्स रु लाइट आसी कि P1 रे पडिला actually light can be allowed to fall on the plate P1 at all angles on the plate okay so ame ebe gote set of parallel reflected rays paiba okay you can see A1 ru
एबे ये एपटे जीवो बिकॉज रिफ्लेक्शन है। ओके सिमिलरली A1 रु ये ट्रांसमिट है कि B1 पटे भी जीवो B1 रु रिफ्लेक्शन है कि A2 रु एपटे भी आसी पारे एपटे भी आसीबो माने रिफ्लेक्शन भी होउची एट द सेम टाइम रिफ्रैक्शन भी होउची एई भलिया जिगजैग है कि ये पाथ रे गला। ओके सो एठी रिफ्लेक्टेड रेज को कोटा हला A1 R1 A2 R2 A3 R3 एंड सो ऑन आपको जदि आमे ऊपर को भी जीवा। ओके सिमिलरली सेट ऑफ parallel transmitted rays आमे पाइबा which are actually एठी जो रिफ्रैक्शन है कि ए पटे गली जाउची। ओके सो B1 T1 ओके B1 T1 B2 T2 एंड B3 T3 माने ए जो तीनटा। ओके आपको भी आमे आपको बढ़ाई परिबा। ओके दीज आर द ट्रांसमिटेड रे। ओके एक्चुअली आमे एठी रिफ्रैक्शन न कहि कि ट्रांसमिशन कहले बेटर। Okay transmission seems to be more appropriate word. Okay so I'm a set of parallel reflected rays paila and also set of parallel transmitted rays paila due to multiple reflection between the two plates that is P1 and P2. Okay acha let us say that the reflection coefficient of amplitude be square root of r. Okay square root of r हेगला ये जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट रो एम्पलीट्यूड। सिमिलरली ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट रो एम्पलीट्यूड को जदि आमे कहबा स्क्वायर रूट ऑफ t। ओके r for reflection t for transmission then since we have taken the amplitude of incident ray as a1 to be equal to unity जदि unity amplitude रो आछि so amplitude of the ray a1 b1 becomes square root of t। ओके माने A1 B1 ए लाइटटा टोटल लाइटटा ता माने जदि ए पटे गला ताले यार एम्पलीट्यूड केते हबो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ t। ओके एम्पलीट्यूड ऑफ B1 T1 ए लाइटटा ओके B1 T1 यार एबे एम्पलीट्यूड केते हबो स्क्वायर रूट ऑफ t into square root of t that is equal to t। so in this way amplitude of rays B1 A2 and A2 B2 will be how much square root of RT then square root of R into square root of RT। okay B1 A2 माने देखो एठी एटा रिफ्लेक्शन ही के आछी। ओके तापरे A2 B2 जदि आमे कहबा एटा ए पटे रिफ्लेक्शन ही के आसिला। ओके किंतु आफ्टर ट्रांसमिशन तेणु करी स्क्वायर रूट ऑफ R into square root of RT or R into square root of T। also the amplitude of transmitted ray माने एठी जदि B2 T2 एटा हला ट्रांसमिटेड रे एठी कोन हबो यार एम्पलीट्यूड हे जिवो चेक करिवो इक्वल टू RT हबो। इन दिस वे आमे सबु जेते एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करि परिबा along B1 T1 B2 T2 B3 T3 they will be like T RT R square T R cube T respectively। okay अच्छा now as the refractive index of air is 1 आमे जानिचु एयर बा वैक्यूम भी जदि कह तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होची कोन इक्वल टू 1 and there is no phase change due to reflection from silvered surfaces। okay phase change टा केते बेले हबो when the reflection is occurring from denser surfaces। okay so the path difference that is suppose capital D between the two consecutive transmitted waves can be written एटा जदि आमे thin film रो ଯେତେବେଳେ ପଡୁଥିଲା ସେଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ को देखिबा then it will be 2 mu t cos theta और एठी mu रो वैल्यू जेहेतु एयर अछि सो इक्वल टू 1 पुट कर देले 2t cos theta hence phase difference हे जिवो 2 pi by lambda into the path difference। ओके सो एठी path difference को हमें सपोज कहिला इक्वल टू डेल्टा। ओके ताले 2 pi by lambda into delta which is the phase difference between the consecutive transmitted beam। okay so यार वैल्यू टा आसीबो 4 pi t cos theta by lambda। now the displacement of the incident ray eta wave equation को अबे आसीबा। okay displacement wave equation incident ray रो या को सपोज हमें लिखिला y dash equal to a sin omega t जेहेतु हमें यूनिट एम्पलीट्यूड नहीं जो इंसिडेंट बीम रो दैट इज स्मॉल a equal to 1 which is amplitude 1 so sin omega t। similarly displacement for transmitted ray can be written as suppose या को ट्रांसमिटेड को हमें y1 कहला ताले तार एम्पलीट्यूड ऑलरेडी बाहर करछु सो t sin omega t। ओके
सिमिलरली y2 यार वैल्यू हम आर टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइ एबे आसीबो कहीं बिकज फेज एबे एंगल क्रिएट हम ओके जेहेतु एम्पलीट्यूड फॉर y2 इज आर टी ओके एम्पलीट्यूड तो आम पाई आर टी किंतु फेज क्रिएट हम दैट इज फाइ ओके तापरे y3 पाई आर स्क्वायर टी आम एम्पलीट्यूड पाइथिला एबे फेज हो केते 2 फाइ y4 पाई आम एम्पलीट्यूड पाइथिला आर क्यूब टी एबे फेज क्रिएट हम 3 5 and so on okay. So now let us say that the amplitude of the resultant wave which is obtained using the principle of superposition be suppose capital A and the resultant phase difference be suppose delta, then we can write the general equation y equal to a sin omega t minus delta ओके सो या आम ए साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा ए हिसाब से लिखिदेला ओके अच्छा ताले एठी y कौन हियर y अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आम बाहर कला कौन सिंपली y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन सब गुड़ा को ऐड कर देला अच्छा ताले एबे आम रिप्लेसमेंट करबा y रो रिप्लेसमेंट एपटे लिखिबा आउ y1 y2 y3 जो जो वैल्यू गुड़ा पाइथिला एपटे लिखिबा एंड वी ट्राई टू solve these equation okay केमती solve करिबा we will equate the coefficient of sin omega t and cos omega t on either side okay after simplification sin और cos रो coefficient को हमें equate करिबा okay so after equating the coefficient we have तमे चेक करिबो a cos delta यार वैल्यू आसी जीवो t plus rt cos phi plus r square t cos 2 phi and so on a sin delta आसी जीवो यार वैल्यू rt sin phi plus r square t sin 2 phi plus so on the extra higher order terms okay so as the resultant intensity I is the square of the resultant amplitude आमे जानी छु already intensity होची amplitude रो square संगरे proportional ओके सो एठी यदि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमें 1 नेला ताहले i विल बी इक्वल टू a स्क्वायर ओके सो हमें एठी a रो वैल्यू यदि हिसाब रे लिखुछु ओके वेयर योर स्मॉल i इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ -1 एटा कॉम्प्लेक्स नंबर जो तुम पढिथिबो ओके सो हियर द टर्म a cos डेल्टा प्लस i a sin डेल्टा ए जो फर्स्ट टर्मटा अछि याको हमें सिंप्लीफाई करि परिबा ओके केमती देखो a cos डेल्टा और a sin डेल्टा रो जो जो वैल्यू पाइथिला ताको पुट कर दबा एंड वी ट्राई टू सॉल्व इट देखिबो यार वैल्यू आसीबो t बाय 1 माइनस r e टू द पावर i phi ओके अच्छा तापरे एबे सेकंड टर्म को लक्ष्य करो याको भी सही बळे हमें सॉल्व करिवा को चेष्टा करिबा ओके इन द सेम मैनर देन यार वैल्यू देखिबो आसीबो अगेन now t by 1 minus r e to the power minus i phi ओके एटा चेंज हला ओके सो एबे ए दुई वैल्यू को पुट कर देला हम पाइ गला हमरो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी देयर आफ्टर वी मल्टीप्लाई ओके फर्दर सिंप्लिफिकेशन कले यार फाइनल वैल्यू एतिकी आसिला व्हिच इज द इक्वेशन representing the resultant intensity and it depends upon the value of r and phi okay also t should be also there okay because t एठी ऊपर अछि so value जोटा होची इंटेंसिटी रो डिपेंड करूची आर टी और फाइ ऊपर ओके अच्छा एबे को केस रे मैक्सिमा पाइबा बा को केस रे मिनिमा पाइबा इंटेंसिटी रो ताकू एबे चेक करबा प्रथम हैला फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी sin स्क्वायर 5/2 शुड बी इक्वल टू 0 एटा को केस रे पॉसिबल जते बेले 5/2 रो वैल्यू निहाती भाव रे 180 डिग्री बा तारो प्रोडक्ट हेबो माने pi 2 pi 3 pi and so on that is generally you can write it as n pi okay n equal to it is 0 भी ही पारे okay अच्छा ताले phi रो वैल्यू हे गला 2n pi okay similarly for the case of minima that is having minimum intensity sin square 5/2 must be equal to 1 so that 5/2 must be an odd integral multiple of 90 degree that is odd integral multiple of pi/2 okay or phi equal to 2n plus 1 pi ओके अच्छा हेन्स आई मैक्स बा मैक्सिमम इंटेंसिटी को आमे ए हिसाब रे लिखिला टी स्क्वायर पाए 1 माइनस आर रो होल स्क्वायर माने
जो इंटेंसिटी रो आमे वैल्यूटा पाई से केस रे एबे sin स्क्वायर 5/2 रो वैल्यू लगेबा मैक्सिमा पई आमे 0 पुट करबा जेमति देखुला आउ मिनिमा पई sin स्क्वायर 5/2 रो वैल्यू केते करबा 1 ओके सो मिनिमा पई इंटेंसिटी आसीबो t स्क्वायर बाय 1 प्लस r रो होल स्क्वायर ओके सो फ्रॉम द एक्सप्रेशन of intensity I and the maximum intensity I max we can write the ratio I by I max equal to this much okay एठी देखो डिनोमिनेटर रे एई जो क्वांटिटी अछि 4r बाय 1 माइनस r रो होल स्क्वायर याको आमे रिप्लेस कर देला गोटे क्वांटिटी कैपिटल f सह याको आमे कहबा कोएफिशिएंट ऑफ फाइननेस ताले द इक्वेशन बिकम्स मच सिंपलर okay so এই যে coefficient of fineness কোন it is actually a number of an interferometer which is defined as the ratio of peak distance to the peak half width okay এই দুইটার রেশিও কো আমি coefficient of fineness f বলি কি কহিবা okay a point here to remember is that narrow bright fringes on a dark background are obtained in transmission. Similarly, narrow dark fringes on a bright background are obtained in case of reflection. Okay, so transmission और reflection दुई भितर differentiate केमती करिबा in case of transmission narrow bright fringes हमें पाइबा dark background रे आउ in case of your reflection narrow dark fringes पाइबा on the bright background okay अच्छा further moving the condition for maxima is when the path reference is an integral multiple of wavelength that I am starting ru janichu by even multiple of lambda by 2 so here we can write 2t cos theta because mu equal to 1 for air which is equal to n lambda also the condition for minima but darkness ketebele when the path difference is an odd integral multiple of lambda by 2 so 2t cos theta equal to 2n minus 1 into lambda by 2 okay acha এই जो एंगल थीटा अछि it is actually a constant for particular value of n lambda and t okay so n बा जो नंबर होची ऑर्डर तापर वेवलेंथ आउ एटी t हला जो थिकनेस particularly এই তিনটা ভ্যালু পাই angle theta constant রই থাকে so the locus of all points having the same value of theta will form a circle okay what is circle तैयारी करिवो and therefore the observed fringes in the interference pattern will be circular in shape okay now coming to the visibility of fringes को हमें define करि परिबा vf okay v for visibility f for fringes obviously so vf कोन यार वैल्यू I max minus I min divided by I max plus I min माने maximum आउ minimum intensity रो difference रहिला न्यूमरेटर रे आ दुई इंटेंसिटी रो समेशन रहिला डिनोमिनेटर रे यार वैल्यू आसीबो आफ्टर पुटिंग 2r by 1 plus r square okay hence we conclude that the visibility of fringes depends upon the coefficient of reflection r only एठी t आउ किछि भी आसीबो नाही okay now moving further let us see the sharpness of fringes okay so for this purpose we will plot a graph by taking the intensity I on the y-axis and phase angle phi along the x-axis okay graph को जीवा पूर्वरु देखो याको ए जो ग्राफ टा हमें प्लॉट करिवा फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट r हमें प्लॉट करिवा then the shape of the graph ताको फिगर देखिया पूर्वरु आमे सपोज एठी पुट कला I by I max equal to half काहे कि बिकॉज़ हमको हाफ width जोटा हमें देखुतला हाफ width पिक रो सेही वैल्यू आनिबार अछि ओके I by I max रो तो ऑलरेडी वैल्यू पाइछु याको इक्वल टू हाफ करिबा ओके एठी f हेगला कोएफिशिएंट ऑफ फाइननेस ओके सो दिस इज आवर प्लॉट ओके सो एठी y एक्सिस रे एज आई सेड एठी हमें इंटेंसिटी नेला x एक्सिस रे फेज एंगल नेला so the graph is coming to be like this the highest peak is the maximum intensity obviously आउ ए maximum intensity रो आधा एक जगह रे आसिला so ए आधा को जो दुईटा पॉइंट रे हमें पाउछु ए दुई पॉइंट भितर डिफरेंस को हमें कहबा हाफ विड्थ ओके अच्छा ताले जो इक्वेशन हमें देखुतला I by I max equal to half ताले I by I max रो वैल्यू पुट कला सेथिरो देखिबो आसीबो phi रो वैल्यू 2 sin inverse 1 minus r by 2 root 2 okay and for small values of phase angle
we can take this sin phi nearly equal to phi ताले एठी phi equal to 1 minus r by square root of r ହେଇଯିବ ओके अच्छा now we have एठी केमती आसिला बिकॉज देखो ए 2 को फर्स्ट आमे एपट को नेला ताले phi by 2 हबो तापरे sin इनवर्स स्क्वायर एपट को नेले आमे sin phi by 2 ओके sin phi by 2 ହେଇଯିବ equal to 1 minus r by 2 root 2 ओके एई हिसाब रे आमे लिखि परिबा आउ sin phi by 2 को नियरली equal to phi by 2 कर देले एबे ହେଇଯିବ कोन phi by 2 equal to 1 minus r by 2 root 2 ओके सो एठी तुम लक्ष्य कर एठी आई थिंक टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अछि मते जा लागुची दिस शुड नॉट बी रूट 2 दिस शुड बी रूट ओवर ऑफ r ओके चेक करिवो एठी 2 और 2 कैंसिल गला ओके सो दैट phi रो वैल्यू तुम पाई गलो 1 minus r by square root of r as written here okay acha now here we have taken the ratio of the net intensity to the maximum intensity as half in order to define the quantity that is called the half fringe width jota eta kohutili ei distance ta okay it is defined as the width of the fringes in terms of phase difference between any 2 points on either side of the maximum intensity that is Imax where it reduces exactly to half of its maximum value okay ताले physical significance कोन ए जो half fringe width रो physical significance is that the sharpness of maxima can be obtained from this half fringe width okay if the value of half fringe width is small okay जदि small value रोची ताले maxima will be more sharp okay जेते छोटो रहिबो half fringe width सेते peak रो height ता बढ़िबो okay more sharp रहिबो and sharpness of the maxima also depends upon the coefficient of reflection that is r okay and greater is the value of r more sharp will be the maxima okay so jodi ame I by I max ro gote graph plot kariba okay against your phase angle that is phi okay at different values of coefficient of reflection that is r suppose तीनटा value ame nela r1 r2 r3 such that r1 is greater than r2 greater than r3 ताले accordingly आमे ए हिसाब रे देखो एटा आसिला तमरो r1 पई प्लॉट सिमिलरली r2 पई ए हिसाब रे प्लॉट आसुची देन r3 पई ए हिसाब रे प्लॉट आसुची ओके सो from the above graph it is clear very clear that the fringe width decreases okay देखो fringe width माने r1 पई एति की रहउतला ओके तापरे r2 पई देखो बढ़िबो ओके समान जगह रे देन r3 पई आउ बढ़िबो ओके सो fringe width actually decreases with the increase of r r रो वैल्यू जेते जेते हमें बढ़े गला fringe width actually कमी कमी गला okay so in case of your maxima to be much sharper in the Fabry-Parot interferometer आमे देखिबा को पाउछु जे माइकेलसन इंटरफेरोमीटर अपेक्षा Fabry-Parot इंटरफेरोमीटर रे मैक्सिमा गुडा बेसी शार्प रहुची ओके अच्छा now moving further determination of wavelength just like in case of your Michelson interferometer जेमति आमे determine करथिला wavelength of light source by using Fabry-Parot meter भी आमे से बळिया बाहर करि परिबा ओके सो जो प्लेट आमे देखुथिला फर्स्ट फिगर रे P1 it is to be mounted on a carriage which can be shifted in a direction normal to the reflecting surface now the adjustment is done to the interferometer केते बेलो पर्यंत एडजस्ट करिबा जेते बेलो जाय सर्कुलर फ्रिंजेस हमें न पाउछु ऑन द स्क्रीन ओके सपोज हमें कहला जो ब्राइट फ्रिंज गुटे पाइला तार ऑर्डर को नेगला सपोज स्मॉल n ताले हमें एठी लेखि परिबा 2t equal to n lambda and here we have taken the medium to be equal to air that is for which the refractive index mu is equal to 1 और theta को भी नहीं जाउछु हमें 0 at the center okay so 2t equal to n lambda asila now let the plate p1 be shifted from a position suppose x1 to some other position that is x2 so that the path difference now delta becomes x2 minus x1 okay या भितरे ए जो पोजिशन शिफ्टिंग भितरे आमे जदि कहला जे कैपिटल n संख्यक फ्रिंज
आमे देखिया को पाइला which are appearing at the center. Then we can write capital N into lambda by 2 equal to delta. एठी गोटे जिनस मन रख ये जो कैपिटल एन नंबर अच्छी वी डोंट नो एटा इवन नंबर भी हो पारे ऑड नंबर भी हो पारे ओके इवन नंबर जदि हैला ताहले ब्राइटनेस आसीबो जेतेबेले आमे देखुछु ब्राइटनेस पाई इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हुए आ जदि ऑड नंबर हैला ताहले डार्कनेस आसीबो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हेले एंड दिस विल बी इक्वल टू द path difference. Okay, so from this equation we can write the value of wavelength, that is lambda, to be equal to 2 delta by n. Okay, and in this way the wavelength of light can be determined by using the Fabry-Parot interferometer. Okay, now coming to the contrast, जेमती तमे टेलीविजन रे भी contrast set करो. So in case of Fabry-Parot interferometer, contrast is defined as the ratio of the peak intensity to the minimum intensity, माने Imax और Imin ये दुई रो ratio. Okay, so generally contrast is equal to 1 plus f. F जेमती आमे कहूतिला coefficient of fineness. आउ in case of ideal case the contrast should be equal to 1. Okay, माने coefficient of fineness f will approach towards 0. Okay, now moving further, the fringes of equal chromatic order, by in short कहि परिबा FECO fringes, माने multiple fringes of equal chromatic order can be obtained with two highly reflecting surfaces by using this Fabry-Parot interferometer. माने P1 P2 जो दुईटा आमे रिफ्लेक्टिंग सरफेस नौचु जदि पूरा हाईली रिफ्लेक्टिंग नला ताहले आमे मल्टीपल बीम फ्रिंजेस पाई परिबा इक्वल क्रोमेटिक ऑर्डर रे. And since the two glass plates acting as reflecting surfaces can be set parallel to each other, so very sharp fringes can be obtained, and these FECO fringes have been widely used for the study of microstructure of the surfaces. Okay, जेमती मु कहितली ऑप्टिकल रिसर्च रे Fabry-Parot interferometer बहुत यूज होची. Okay, so let us see finally some of the uses of this Fabry-Parot interferometer. Okay, number 1, in determining obviously the wavelength of light with much accuracy in optical wave meters and also in optical spectrum analyzers. Okay, then number 2, in study of hyperfine structure of spectral lines. Okay, spectral lines जोटा तमे देखि देबो पढि देबो in case of hydrogen spectra जेमति Bohr atom model रे. Then number 3, in making the spectrometer capable of observing the Zeeman effect. Already या विषय रे क्वांटम मेकानिक्स रे तमे पढि देबो Zeeman effect. Okay, गोटे normal गोटे anomalous. So observing this Zeeman effect where the spectral lines are too far close together to distinguish with the normal spectrometer. Okay, so याकू observe करिया पय हमें Fabry-Parot interferometer use करू. Then in the astronomy to select a single atomic transition for imaging. Okay, then in case of your gravitational wave detector, this is a very important point, such as LIGO. LIGO माने कोन? It is the laser interferometer gravitational wave observatory. Okay, या विषय डिटेल आमे तळ पॉइंट रे पढिबा. So it consists of a Michelson interferometer along with a Fabry-Parot cavity, so that photons are stored in the Fabry-Parot cavity for a millisecond in order to increase the time of interaction of gravitational wave with light. ताले जो LIGO कथा कहउतली, this is one of the great discovery in this century. Okay, जोटा कि आइंस्टाइन जोटा प्रेडिक्ट करथिले इन केस ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिटेक्शन हेतिला ग्रेविटेशनल वेव्स रो. ओके, आउ एथिरे जर्नल पेपर भी पब्लिश हेतिला ऑन 11th of February 2016. ओके, दिस इज LIGO. या विषय तमे गूगल करी भी आहुरी डिटेल सर्च करि परिबो. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन स्टैंडर्डाइजिंग द मीटर एथिपाई भी यूज करि परिबा. देन इन फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गैसेस एट वेरियस प्रेशर्स. Then finally in making the interference filters which transmits nearly a monochromatic beam of light covering a small range around 10 angstrom. एतिकी small range रे भी हमें interference filter use करि परिबा. Okay, now at the end let us maybe एटा क्वेश्चन पढ़ी पारे, let us compare between these two interferometer. गोटे जेमते हमें देखला Michelson, गोटे Fabry-Parot.
Okay, so number one, it is based upon the principle of interference by division of amplitude. Kintu Fabry-Parot kono, it is based upon the principle of multiple reflection. This is very important point. Okay, एठी division of amplitude होउची interference आसची, एठी multiple reflection होउची interference आसची. Okay, both interferometer रे interference ही होउची. Now you are getting the circular fringes. Okay, now interfering beams are separated and can be used to measure the path difference. Here the interfering beams are not separated and so cannot be used for measurement of path difference. Okay, third point, the distance between the one mirror and the image of the other mirror is very small. Kintu eti distance between the two plates is fairly large, so that the fringes are observed almost near the normal direction. Okay, fourth point रे कहला, the fringes observed do not have sharp maxima, kintu ethi it will have sharp maxima. Then fifth point, the radius of the ring is not a function of the wavelength, but here it is a function of the wavelength. And finally, the compensating plate, which is used to make the two paths of the light to be same exactly. Okay, गोटे compensating plate आम यूज करूँ. Okay, किंतु एठी किसी भी compensating plate रो आवश्यकता नहीं. Okay, so this is all about the Fabry-Parot interferometer. Thank you.